ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। हमारा जो है, कहाँ गया स्क्रीन? हाँ, तो एक और लेमा है। इट इज रिगार्डिंग द कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, ऑल्दो इट डजंट सीम सो। जो तुम्हारा पहला कोर्स है उसमें शायद उसका अंदाजा ना हो तुम्हें, बट वी आर गोइंग टू एक्चुअली मतलब जो स्टेटमेंट है हान बनाक थ्योरम का, विच इज इक्विवेलेंट टू द अर्लियर जो हमने किया था नॉर्मल लीनियर स्पेसेस में, उसमें हमने वो कॉन्वेक्सिटी की मतलब कॉन्वेक्स सेट्स पे वो बेस्ड है। तो इसलिए हम शुरू करते हैं एक लेमा टू डू सम ग्राउंड वर्क फॉर हान बनाक थ्योरम। वो ये है कि लेट एक्स बी a linear space, vector space over some field K, and Y be a subspace of X. Y be a subspace of X that is not a hyperspace. That is not a hyperspace in X. And hyperspace तुम्हें भी पता चला वो क्या है। If x1, x2 are two vectors that belong to X but not this subspace Y, and they are inside X but not inside Y, then there is some X belonging to X such that T of x1 plus 1 minus T of X and does not belong to Y, and T of x2 plus 1 minus T times X does not belong to Y for all T belonging to closed interval 0. And if X is a normal linear space, उस पे एक टोपोलॉजी होगी फिर। Then the complement, then ऐसे मैं लिखता हूँ YC complement of Y in X is connected. Connection तुमने पढ़ा होगा टोपोलॉजी में, that you cannot break it into two pieces. ये कुछ ज्यादा नहीं है, जो ये थ्योरम का ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है उतना कुछ खास है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं R3 से समझाऊं, R3 में इट्स सो ऑब्वियस इस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब मुझे बता दो, अगर कोई हाइपर स्पेस होगी, हाइपर स्पेस हमेशा, अगर मैं R3 में एक प्लेन डालूं विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, राइट, और मान लो दो एलिमेंट्स में लूं x1 यहाँ पे x2 यहाँ पे, है ना, मतलब एक प्लेन के एक साइड पे मैंने लिया x1, प्लेन के दूसरे साइड पे मैंने लिया x2, right? Then I can always find an x inside x such that ये लाइन सेगमेंट जो है ये y के अंदर पूरे का पूरा ना हो, है ना। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे x है तो ऑब्वियसली इसको लाइन सेगमेंट को जोड़ दो तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता पूरे का पूरा, है ना। ओ सॉरी, गलती हो गई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ ये इसमें नहीं है, क्योंकि देखो अगर हाइपर स्पेस है, कहने का मतलब ये है, मैंने ओके, अगर x1 x2 इस हाइपर स्पेस में नहीं है, ये एक तरह से इसको ब्रेक करता है, राइट। ब्रेक करने का मतलब कि आई कैन ऑलवेज, मतलब अगर मैं हमेशा एक x ढूंढ सकता हूं सच दैट, मैंने क्या लिख दिया, tx1 tx2, अच्छा, तो कहने का मतलब ये कि you can always find an, you can never find an,
मतलब इसका क्या होगा उल्टा, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ना हाइपर स्पेस। चलो मैं हाइपर स्पेस नहीं लेता हूँ, बेटर वही है, इस तरह से क्लियर नहीं होगा। हमें पता है इसके, अगर मैं लूंगा लाइन थ्रू द ओरिजिन, इट इज नॉट अ हाइपर स्पेस, है ना। ये मेरा y है, ये पूरी की पूरी स्पेस x है, और y इज नॉट ए हाइपर स्पेस। अब तुम इमेजिन करो एक लाइन है R3 स्पेस में, है ना, देन यू कैन ऑल, अगर तुम्हारे पास x1 x2 है, ठीक है ना, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है यू कैन ऑलवेज ड्रॉ ए लाइन बिटवीन x1 एंड सम एलिमेंट ऑफ x, एनी एलिमेंट ऑफ x एक्चुअली, विच वुड अवॉइड y, वो लाइन सेगमेंट लाइन को अवॉइड करेगा। लेकिन अगर ये प्लेन थ्रू द ओरिजिन था, वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर ये प्लेन थ्रू द ओरिजिन है, यू कैन नॉट ऑलवेज ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन ए वेक्टर आउटसाइड द प्लेन एंड सम x। अगर यहाँ पे हो तो यू कैन नॉट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विच वुड अवॉइड दिस प्लेन, but you could always draw a line segment from a point not on the line to a point inside x which completely avoids the subspace which is not a hyperspace, I mean here line। लेकिन प्लेन को हमेशा अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसको दो हिस्सों में काट देगा। लेकिन लाइन को in a three space, because line is not a hyperspace of three-dimensional three-dimensional space, so you can always, if x1 does not belong to that y, then you can draw a line segment to any point outside of y such that the line segment avoids the subspace। So that is the idea। मतलब अगर तुम imagine करोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हमें R3 के लिए प्रूव नहीं करना, हमें किसी भी लीनियर स्पेस के लिए प्रूव करना है, which could be infinite dimension, पता नहीं वो कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज R3 में तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। So let us start proof। If t of x1 plus 1 minus t times x2 does not belong to y for all t belonging to open interval 0 1, of course close में तो है ही true है ना, because x1 x2, मतलब मेरे कहने का मतलब है तुम कहोगे यहाँ है t belongs to the closed interval 0 1, लेकिन 0 1 correspond, the values of 0 and 1 of t correspond to x1 and x2, which we know they do not belong to y। Okay, anyways, अगर ये t of x1 minus 1 minus t into x2 does not belong to t for all t belonging to 0 1, then we can set, तो हमारा काम हो गया, then we can set x equal to x2 and we are done। यानी हमें प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, t of x1 minus 1 minus t times x does not belong to y। So let us suppose, तो इसको अवॉइड करने के लिए, so let us suppose there is some s for some fixed s, यहाँ तो for all है तो इसका opposition, इसका contrary, belonging to open interval 0 1 such that s times x1 plus 1 minus s times x2 belongs to y। Then it is easy to see that अगर ऐसा है, to see that span of y union x1, इसको हम ऐसे लिखते हैं usually, is equal to span of y union x2। मतलब we can prove that कैसे, because अगर sx1 plus 1 minus s times x2 y के अंदर है, let's call it y, then I can just transpose the things and then x1 can be written as 1 by s into y plus s minus 1 divided by, transpose करके divided by s times x2।
which of course belongs to span of y union x2. अगर ये span of y union x2 में है, x1 यहाँ belong करता है, it means that y union x1 का जो span है, क्योंकि ये सब space है वगैरह वगैरह, is contained in span of y union x2, क्योंकि y इनमें कॉमन है, x1 बाहर था और वो इस स्पैन में है, तो पूरा का पूरा यूनियन भी उसी में होगा, बिकॉज y is already here, और span of y is already here because it's a vector space. Similarly तुम रिवर्स भी दे सकते हो, if you solve it for x2 तो फिर इसका रिवर्स इंक्लूजन भी आ जाएगा, इसका मतलब जो मैं कह रहा था कि span of y union x1 would be the same as span of y union x2. Okay. Now we know that y is not a hyperspace. ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, और ऑफ कोर्स ये भी हमें पता है x1 x2 जो है वो y के अंदर नहीं है, ठीक है. So I can say I can choose an x. Now let x belong to x such that x does not belong to span of y union x1, क्योंकि अगर हर कोई x इसमें बिलोंग करेगा, x का हर कोई एलिमेंट अगर इस स्पैन ऑफ y यूनियन x1 में बिलोंग करेगा, तो दैट वुड इंप्लाई दैट y is a hyperspace by definition. So I can choose x such that y does not belong here, and let if possible y equal to tx1, ये वाला x अगर मैं पकड़ता हूँ, plus 1 minus t times x belong to y for all, okay, for some all नहीं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि it does not belong to, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है this does not belong to y for any t lying between 0 and 1. तो अब मैं कहता हूँ suppose it belongs to this for some t belonging to 0 1, then I can again do my vector space operations and get x is equal to y minus tx1 divided by 1 minus t. तो अगर ये y में है, तो ये x जो है ये बिलोंग करता है, as you can see, span of y union, मैं गलत लिख रहा हूँ, y union x1. Okay, hence अगर x बिलोंग करता है इसके स्पैन में, अगर ये y में है, then this must belong to span of y union x1. लेकिन हमारा क्या है, हमने x को ऐसे चूज किया है, and we can choose that because y is not a hyperspace, x does not belong to span of y union x1. So that would be a contradiction. That would be a contradiction. Hence a contradiction. And we are done, which implies that t of x2 plus t of x2 था कि x1 था, t of x1, t of x1 actually x2 भी हो सकता है, 1 minus t times x does not belong to y for any या all t belonging to open interval 0 1, of course. And similarly we can do the other thing, क्योंकि हमें फिर solve करना होगा for x2 rather than, मतलब यहाँ लेना है फिर x belongs to, क्योंकि y union x1 का span बराबर है y union x2 का, तो अगर हम यहाँ y union x2 कर दें instead of y union span of y union x1, तो we will get the result that similarly x does not belong to span of, now since similarly since x does not belong to span of y union x2, क्योंकि they are essentially the same, which implies that t of x2 plus 1 minus t
times x does not belong to y for all t belonging to open interval 0 and we are done. तो पहला हिस्सा हमारा प्रूव हो गया एंड इसमें खाली हमने एल्जेब्राइक चीजों को यूज किया, एडिशन, स्पैन वगैरह वगैरह. तो बी में हमारा दूसरा है कि देन ये जो हाइपर स्पेस है इसका कॉम्प्लीमेंट कनेक्टेड होता है. मतलब वो भी ऑब्वियस है. कनेक्टेड का मतलब इट कैन नॉट बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स. सो अगर हाइपर स्पेस हो देन ऑफ कोर्स जो बचा है ना इसका वाई कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑफ कोर्स ऊपर भी ओपन सेट है नीचे भी ओपन सेट है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट इज क्लियरली डिसकनेक्टेड अगर ये हाइपर स्पेस होती. लेकिन अगर ये हाइपर स्पेस ना हो, अगर ये लाइन हो, देन क्लियरली इट इज जो वाई कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बोलते हैं, कनेक्टेड है. तो टू प्रूव बी नाम रखा था उसको हमने, बी पार्ट रखा था कि नहीं, ऐसे ही लिखा. अब टू प्रूव दैट y complement is connected, right? Assume to the contrary, y complement is not connected. और topologically उसका मतलब ये है, क्योंकि connectedness is a topological concept, it implies that y complement is equal to S1 union S2, where S1 and S2 are two non-empty disjoint open sets in y complement rather, under subspace topology. मतलब ये मुझे टोपोलॉजी का तुम्हें पता होगा तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, हालांकि ये इट इज अंडरस्टूड व्हाट वी मीन बाय हियर. ओके, नाउ कंसीडर x1 belonging to s1 and x2 belonging to s2. And remember that इसका मतलब क्या है, x1 x2 belongs to y complement. अब मैं ले रहा हूँ एक इसमें एक दूसरे में, क्योंकि डिसजॉइंट है. तो अगर ये डिसजॉइंट है तो मैंने यहां लिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है x1 x2 जो है, मतलब मैं प्रीवियस जो पार्ट है उसको यूज करना चाहता हूँ. दे डू नॉट बिलोंग टू y, क्योंकि दे बिलोंग टू y कॉम्प्लीमेंट, है ना. बाय अबव जो हमने किया था ऊपर वाला रिजल्ट, बाय अबव देयर एग्जिस्ट सम x belonging to x such that minus t x1 plus 1 plus t into x belongs to y complement, then it does not belong to y for all t belonging to minus 1 0. ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ लैंग्वेज, माइनस टी बिलोंग्स टू माइनस 1 0, तो यहाँ मैंने अकॉर्डिंगली माइनस से उसको एडजस्ट कर लिया. एंड टी एक्स टू प्लस 1 माइनस टी इंटू एक्स belongs to y complement for all t belonging to 0 1. Okay, define alpha from minus 1 to 1 to y complement as follows. Simple सा है, alpha of t is equal to minus t times x1 plus जो मैंने ऊपर लिखा 1 plus t times x if t belongs to minus 1 0, and this is equal to जो कि मैंने ऊपर लिखा tx2 plus 1 minus t times x if t belongs to 0 1. देन अब मैं यहाँ इसको खत्म करूंगा क्योंकि टोपोलॉजिकल आर्गुमेंट है जो तुम्हें पता ही होगा. देन alpha defines a path from minus 1 1 to y complement.
and since path connected, चलो मैं इसको लिखता हूँ, defines a path, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ दूसरे पेज पे लिखता हूँ, then alpha defines a path, path means a continuous map, कुछ ऐसा डरने की बात नहीं, in y complement from x1 to x2, which implies that x1 is path connected to x2, which implies then, now since x1 belongs to s1 and x2 belongs to s2, this is a contradiction. Why is it a contradiction? Because ये तुम देख लेना टोपोलॉजी में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम एक बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा. Because path connectedness implies connectedness. Hence, y complement is connected. It is connected if y is not a hyperspace. अब मैं इसमें जो तुम में से जो अभी सोया नहीं है और जो थोड़ा इंटरेस्टेड है उसके लिए बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ये सिंपल आइडियाज हैं जो ना अगर हम इंट्यूटिवली सोचें कि अगर कोई हाइपरस्पेस नहीं होगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेम इज ट्रू ऑफ द हान-बानाख थ्योरम ऑफ द सेपरेशन मोड. उसका आइडिया भी इस तरह से सोचना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हेन यू ट्रांसलेट दैट आइडिया टू एन आर्बिट्ररी नॉर्मल लीनियर स्पेस या आर्बिट्ररी वेक्टर स्पेस ऑफ एनी डायमेंशन और व्हाटएवर, जो भी उसकी शक्ल हो, फंक्शंस हो, जो भी हो, वेक्टर्स हो, सीक्वेंसेस हो, तो देन इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हमें उसके लिए मतलब फंडामेंटल चीजें यूज करनी पड़ती हैं, कनेक्टेडनेस की, कॉन्वेक्सिटी की और दूसरी चीजों की. So, in case you have any question, मैं यहाँ रुकता हूँ. I think कल हम एक और करेंगे जिसके बाद हम हान-बानाख थ्योरम तक पहुंच जाएंगे. Okay. Any question? यानी तुम सभी सो रहे थे? अब डजन. अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगा तुम इसमें थोड़ा, हाँ बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो. सर जो पुलवामा से है ना सर, उनका नेट बंद है सर, वो ज्वाइन नहीं कर पाए. नहीं, वैसे भी 20 आ गए हैं तो वो बाद में, किसी ने मुझे एसएमएस भी किया कि त्राल से बंद है कुछ. सर आमिर ने किया था. अच्छा, पुलवामा से. कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये तो चलता ही रहता है. वो वीडियो देख लेगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है. लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेहनत करो. देखो, फंक्शन एनालिसिस सेकंड जो है तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन द सेंस कि तुम्हें बिल्कुल फंडामेंटल जो इसेंशियल आइडियाज हैं हमारे टोपोलॉजी के, हमारे एनालिसिस के, हमारे वेक्टर स्पेस के, इसेंशियल मींस जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है किसी जगह. यानी जो एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है ही उसी चीज का नाम कि जहां पर हम नॉन एसेंशियल चीज को हटा के हम देखते हैं कि कौन सी चीज है जो एक्चुअली मैटर करती हैं इन अ स्टेटमेंट ऑफ इन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ठीक है ना. हम उनको बिल्कुल ना वो चुन के निकालते हैं एक्सियम्स को, अपने असम्पशंस को. तो वही यहाँ पे हो रहा है. तो इसलिए थोड़ा जब भी ऐसा होता है तो उसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है. तो इसलिए तुम भी खूब सारी मेहनत करो, अपना टोपोलॉजी का थोड़ा सा रिवाइज करो, फंक्शन एनालिसिस 1 का थोड़ा सा रिवाइज करो, तो उसको ब्रश अप करो. और अगर उसमें कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो. ठीक है. सो लेट मी स्टॉप इट हियर क्योंकि तुम्हारी दूसरी क्लास होगी.